And how to detect diabetes is very simple. You just need to go to a nearest station, healthcare center, and get your blood screened. Our unhealthy lifestyle, our obesity, stress, which are the triggering factors that you worry about. Where any single organ, it's from starting. It has micro and macro complications. Like it can involve the eyes with retinopathies. CKD is a very major complications. It can also have a direct related with your government that they have to take up this diabetes as a national issue because the way it's so much of spiraling out the number of patients at the moment we have more than 100 millions. नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ साथ कई बीमारियों को भी जन्म देती है। डायबिटीज से कैसे बचें, इसे कैसे कंट्रोल करें और क्या वाकई में इसका कोई टिकाऊ इलाज है, इन सब सवालों के जवाब सुनिए दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर ज्ञान वत्स से। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, हम आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और इस मुहिम में हमारे साथ तमाम हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज फिर एक बार पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल में और आज का हमारा विषय है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के शिकार देश में करोड़ों लोग हो रहे हैं और लगातार ये बढ़ती जा रही है। क्या इसके पीछे का कारण होता है, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और एक जो मरीज़ है उसको कैसे पता चले कि उसको डायबिटीज़ है, ये समझने के लिए आज हमारे साथ हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर ज्ञान वत्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना भी चाहते होंगे। क्या होती है डायबिटीज़ और एक जो मरीज़ होता है कैसे उसको पता चले कि हाँ, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखो डायबिटीज and India going to be the first world capital, the way it's so much spreading like a wildfire. And how to detect diabetes is very simple. You just need to go to a nearest station, healthcare center, and get your blood screened. It takes hardly a few seconds to get your plasma glucose level checked. So as per government's regulation, fasting above 126 milligram per deciliter and your postprandial more than 180 or more than 200 is considered as a diabetes. But it's not only diabetes that we have to worry at this stage. It is the large population of pre-diabetics that India is harboring. That is a worrisome part for us. सर, बहुत सारे लोग होते हैं इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ये क्यों होता है? इसका कारण क्या है? कहा जाता है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो एकदम से हो जाता है। क्यों होती है इंसुलिन की मात्रा कम क्यों होती है? So basically, it's not only insulin that matter here. It's a very complex pathophysiology of a diabetes. So insulin resistance, obesity, so many factors that deficiency of antibodies. But more or less, you have to realize that our unhealthy lifestyle, our obesity, stress, which are the triggering factors that you worry about. और इससे और क्या कुछ बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं? See, most of the time, diabetes is a very silent disease. It's the complications that are worrisome, especially in type 2 diabetes. And complication, it doesn't spare any single organ. It's from starting, it has micro and macro complications. Like it can involve the eyes with retinopathies. CKD is a very major complications. It can also have a direct related with your cardiovascular outcomes and diseases, peripheral vascular diseases, strokes. I think you name it and you find it that diabetes is associated. व्हाट इज डायबिटीज रेटिनोपैथी? इसका आपने कैंप भी लगाया था हॉस्पिटल ने पिछले दिनों, चेकअप के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया। Persistent hyperglycemia or elevated sugar diabetes can lead to very severe changes in your retina, which comes in the form of grades, from grade 1 to grade 4, which comes as retinopathy, which can lead to blindness eventually. एक सवाल जो बहुत सारे पेशेंट भी जानना चाहते होंगे, वो ये जानना चाहते हैं सीधे शब्दों में कि क्या इसका कोई परमानेंट इलाज भी है कि ये परमानेंट ठीक हो जाए, कोई दवाई ना लेनी पड़े? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी भर इसकी दवाई लेनी पड़े। Basically, if you're dealing with type 1, then I don't think so there is any
permanent treatment, etc. You have to be lifelong in insulin care. But type 2, the concept of called reversible of diabetes has come. But this is basically a very strict lifestyle modification, very strict uh, control of your this thing, diets, low calorie intakes. But then there is which is reversible if you can sustain your HbA1c below 6.5 for more than 3 months without any medication, only on diet modification and exercise regime. But this is not everlasting. You can have only remission. Chances of relapse or re-reversal of also is very common. डॉक्टर ज्ञान, जो शुगर के मरीज़ हैं जो ड्रिंक भी करते हैं तो ड्रिंक उनके लिए कितनी हानिकारक होती है? क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो मीठे से होता है, हम तो कड़वी शराब पीते हैं. It's absolutely no. I think diabetes and alcohol doesn't go hand in hand. So I can't really strict no from a doctor medical side. कोई सुझाव आप मरीजों को देना चाहेंगे जो जूझ रहे हैं, उनको कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखो, इस सुझाव is not for the patients, but it's for our government that they to take up this diabetes as a national issue, because the way it's so much of spiraling out the number of patients. At the moment we have more than 100 millions diabetes and 134 millions pre-diabetic. So by 2035 it's going to be a big burden on our health care. So I think it's time that we should make some national policy regarding the management of diabetes. Our diabetes awareness program should be very proactive, along with its complication. That has to be highlighted, not only at the level when the patient is suffering, but at the level of education, at the level of grassroots levels. Second, then this diabetes should not be managed only in the tertiary centers. Our doctors in the peripheries, rural areas, nurses and doctors, they should be trained to handle diabetes as well as hypertension. हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं दिव्य प्लस हॉस्पिटल लगातार दिल्ली के ऐसे इलाकों में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाता है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहां समाज का पिछड़ा वर्ग रहता है और बेसिक मेन तौर पर वहां बीपी शुगर के मरीजों की जांच होती है. तो इसके पीछे आप लोग क्या कुछ मोटिव लेकर चल रहे हैं सर कि आप इतनी फ्री सेवाएँ वर्षों से दे रहे हैं? It's our responsibility to really spread awareness among very major non-communicable disease. So by spending a small amount, if we are able to diagnose a very serious critical problem like diabetes and hypertension, I think we're doing our bit for the society. Any particular discount going on for the patient, for the special diabetic patient? We are always proactive with discounts and other schemes. At the moment, I think as usual, we're giving up to 25%. Thanks for giving your precious time. Thank you very much. तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर ज्ञान वत्स जिन्होंने डायबिटीज़ के बारे में हमसे बातचीत की और हम उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने और समझने को मिला होगा. और अगर आप जूझ रहे हैं इस बीमारी से और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो पालम में स्थित दिव्य प्लस हॉस्पिटल आप पहुंच सकते हैं जहां आपको मिलेंगे प्रोफेशनल डॉक्टर्स. कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़. हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा. अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. फिलहाल इस खबर में इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़. खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.